Now, when the production of goods and services output increases, when the production of goods and services increases, so tax collection also increases, right? Tax collection also increases. So if we are producing more, if our GDP is increasing, our indirect tax collection also increases. But there are certain indirect taxes which doesn't change, doesn't increase with production. For example, जैसे if you will consume more आशीर्वाद आटा, तो government's tax collection will increase. उस पे tax लगता है, right? If farmers are producing more wheat per acre, जो उनके पास जमीन है, if they are producing more wheat, तो एक tax है land revenue. Will it increase? No. Why? Because land revenue is not imposed on per acre basis. It is land revenue is not imposed on production. It is imposed on per acre. So land revenue is imposed per acre basis. Doesn't matter whether you produce or not or how much you produce. So even if you are producing more or less, land revenue is not going to change because it is imposed based on acre basis. ठीक है? So there are very few indirect taxes like land revenue, which does not depend on production of goods and services. And these indirect taxes, which does not depend on production of goods and services, they are called production tax. They are called production tax. And those indirect taxes which depend on production of goods and services, they are called product tax. So product tax depends on production of goods and services, and production tax does not depend on production of goods and services. ठीक है, ये समझ गया आप? वैसे ही if farmers will consume more urea, तो government's subsidy will increase or it will remain same? Increase. So there are certain subsidies which depends on the production and consumption, but there are certain subsidies which doesn't depend on production or consumption. Government gives a fixed amount of subsidy, whether people are consuming more or less, government is not going to change it, government allocates that much amount. जैसे रेलवे में होता है, ठीक है? So what I'm trying to say is there are certain taxes, indirect, very few, जैसे मैंने बताया land revenue, there are very few indirect taxes and subsidies which does not depend on production and consumption. They are called production taxes and production subsidies. समझ गए? तो जब ये समझ गए तो आप बोर्ड पे देखो, आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो क्लियर है. तो मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. एंड एक चीज और ध्यान रखो, 4 factors of production, whatever they were getting, that is called factor cost. On top of it, when we add indirect taxes minus subsidy, then we call GDP market price, है ना? ये लिख लो आप, फॉर्मूला मैं समझाता हूं अभी आप. Now, whether more people travel or less, doesn't matter. From that same amount, subsidy will be given. But this is not true with urea. If farmers, urea pay per bag, it is fixed. If you will consume more urea, government will have to give more subsidy.
हाँ, आप कल भी आए थे, ऑनलाइन देख रहे थे? अच्छा चलो कोई बात, बताइए। हाइपोथेटिकली देखो, सब्सिडीज हम आपको 5 घंटे में पढ़ाएंगे, आगे आएगा, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल लेटर ऑन। फॉर द टाइमिंग आपको मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द सब्सिडीज विच गवर्नमेंट गिव्स, it gives on per unit basis. If you will consume more of that product, government will have to give more subsidy. Government's financial burden will increase. But there are few subsidies which government doesn't give on per unit basis. It allocates a fixed amount for the annually. ठीक है? So whether you are consuming more railway transportation services, government subsidy bill is not going to increase for that. That it will be given from that fixed amount. It's just a nature the way government is giving. It can also be given on per unit basis, but practically right now, railway subsidy is not given on that model. Railway subsidy is allocated fixed amount. So railway subsidy comes under production subsidy. Urea subsidy, LPG subsidy is product subsidy. Almost most of the taxes are of this, indirect taxes are of this nature. हार्डली लैंड रेवेन्यू के अलावा तो और कुछ नहीं पता चला अभी तक, प्रोडक्शन टैक्स. सो मोस्ट ऑफ द टैक्सेस दैट यू हैव हर्ड ऑफ इन इंडिया इज दिस, एंड मोस्ट ऑफ द सब्सिडीज इज दिस. दिस इज हार्डली वन, फ्यू, वेरी फ्यू, 2-3 में. ठीक है. सो मैं आप नहीं, ऑल आर इनडायरेक्ट. आप ये बताओ ना कि आप, यू जस्ट थिंक अबाउट इट. यू आर कंज्यूमिंग मोर एजुकेशन, government is getting more indirect taxes. You are consuming more food, government is getting more tax. So almost all the taxes that you have heard of till now is this. Almost all the subsidies that you have heard of is this. This is hardly any. ठीक. What I'm, तो अब इधर बोर्ड पे देख रहे हो ना, बोर्ड पे देखो आप. For practical purpose, in terms of this is negligible. Our output is more, every year our output is increasing, but this thing is negligible. ठीक. If we, for practical purposes, if we keep it zero, then factor cost is basic price. I have already explained you. Factor cost I have already explained you. So factor cost is basic price. So GDP market price is GVA factor cost. GVA basic price is basically factor cost plus ID indirect taxes minus subsidy. So for all practical purposes, basic price is basically factor cost. For all practical purposes, basic price is basically factor cost, which you already have read in detail yesterday. बहुत माइनर डिफरेंस है, फॉर्मूला याद करना चाहते हो ये है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन इग्नोर दिस बिकॉज दिस इज नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और जीडीपी इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. दिस डजंट चेंज. So this is negligible. This is equal to this. Basic price is factor. So GDP market price you can say. So formula wise ये है, but for all practical purposes यही है जो आप कल पढ़े हो. ये वही है इनडायरेक्ट टैक्सेस आईडी. समझ गए? इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं इसमें? कुछ है तो बताओ आप लोग. तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप समझो बेसिक प्राइस, दिस इज बेसिकली फैक्टर कॉस्ट हो. सपोज गवर्नमेंट अबॉलिशेस लैंड रेवेन्यू, खत्म हो गया, ऐसे ही समझ लो.
So practically basic price is factor cost. देखो टैक्स के बारे में डिटेल आगे हम सब बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो डोंट गो ऑन टू दैट. प्रॉपर्टी टैक्स प्रोडक्शन में नहीं आएगा. इफ यू हम डिटेल में आगे आपको समझाएंगे सारा, लैंड रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ऑल डायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स आगे, ठीक है. तो देखो इकोनॉमी जो आप लोग जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो, हर एक चीज अगर हम सही बताएंगे आपको तो आप समझ नहीं पाओगे. तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज सर्टेन थिंग्स वी इग्नोर, ठीक है, वी इग्नोर, तो कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. एंड एनीवेज यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली ऑन दैट फॉर्मूला कि ये क्या था. यूपीएससी चेक्स योर अंडरस्टैंडिंग, और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अ लॉट ऑफ माइनर थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, फॉर सिंप्लिसिटी वी इग्नोर इट, ठीक है, ताकि आपको बर्डन न पड़े और आप समझने फोकस करो. देखो अल्टीमेट पर्पज इज टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है, अल्टीमेट पर्पज इज क्लियर एग्जाम. उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो व्हाट एवर क्वेश्चन यूपीएससी आस्किंग यू शुड बी एबल टू हैंडल इट. अब उसको सिंप्लीफाइड तरीके से भी किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है. तो टीचर का ये काम है कि ही और शी शुड कीप थिंग्स सिंपल. जो चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड यूपीएससी नेवर एवर इज गोइंग टू आस्क, वो केवल फॉर्मूले के ही पर्पस के लिए डिफाइंड है, तो उसको जरूरत नहीं बताने की. दैट्स व्हाई आई यस्टरडे एक्सप्लेन यू कि जीडीपी मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, वही है. एक्चुअली क्या है ना कि इकोनॉमिक सर्वे ने पब्लिश कर दिया. अब इकोनॉमिक सर्वे को आप बहुत सैक्रोसैंक्ट मांगते हो, तो हर बुक में आ गया, सब में आ गया, तो स्टूडेंट उसको देख लिया समझ में आया नहीं, तो हर जगह उसको डिस्कशन है. तो ये चक्कर में ना ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कितने लोग समझते हैं, मतलब जिनको सेंस है कि हाँ क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, बट डू यू हैव सेंस कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ओके, सो टेल मी. 140 crore people are producing 295 lakh crore of GDP. This 295 lakh crore is basically factor cost plus taxes minus subsidies. ठीक है, clear? So the GDP of India, GDP market price, does it include indirect taxes? How many of you think yes? Of course it's included. इसमें सोचने 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है. You have already read ना भाई कि I said कि GDP market price is factor cost plus indirect taxes minus subsidy. तो GDP market price is 295 lakh crore. उसमें there is some factor cost, maybe 250 to 60 lakh crore, and plus indirect taxes minus subsidies. ठीक है. So GDP market price is how much? कितना है? 295 lakh crore. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सोच के बताना है. यू कैन टेक 1 मिनट टाइम. This rupees 295 lakh crore, which is GDP at market price, does it include direct taxes? ये क्वेश्चन सोच के बताना. This rupees 295 lakh crore, which is GDP at market price, does it include direct taxes? The GDP at market price rupees 295 lakh crore जो last year का है, it includes indirect taxes, you know. Does it include direct taxes also? So how many of you think that rupees 295 lakh crore, which is GDP at market price, it includes direct taxes? And how many of you think that it does not include direct taxes? अच्छा देखो, सिंपल डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स, जो आपको इनकम मिलता है. The 140 crore people produced output, let's say 250 lakh crore factor cost plus 45 lakh crore indirect tax. ठीक, तो 250 lakh crore will come to people and 45 lakh crore will go to government. So 250 lakh crore came to 140 crore people as profit, interest, rent and wages. Now out of that profit or wages,
the people paid direct tax. Out of that, so in this 250 lakh crore, is if 50 lakh crore is the wages, so out of that we again pay direct tax. So does 295 lakh crore includes taxes? Yes. Direct taxes भी include होता है, indirect. Because the profit, interest, rent and wages, on profit, on interest, on rent and wages, on all these four, then people pay direct taxes. समझ गए? मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? अरे सब तो बता दिया. Of course it includes ना भाई 295 लाख करोड़ में से ही तो 295 लाख करोड़ में से ही तो हो गया ना दोनों. Suppose four factors of production wanted 100 rupees for their effort, but when we went to the market to sell the burger, government said we will impose 10 rupees. Forget about subsidies, government imposed 10 rupees tax. So what is the GDP? 110. ठीक है. What is the GDP? 110. Factor cost 100, indirect tax 10 rupees. So now, so product will be sold in 110. 10 will go to government and 100 will come to four factors of production. 100 came to four factors of production. Now if 100 came to four factors of production, let's say I got wages out of 100, 20 rupees. So out of 20 I will pay tax. So this 100 में direct tax is included. ठीक है. So in 295 lakh crore indirect taxes भी हैं, direct taxes. ठीक. What is the percentage of direct and indirect in 295 lakh crore? समझ रहे मैं क्या पूछ रहा हूं? What I'm asking is कि 100 plus 10 factor cost indirect tax. तो 10 तो चला गया indirect tax. Out of this is indirect tax. Out of 100 factor cost, government gets direct tax. अब समझो यहाँ पे what is the GDP? यहाँ पे 110. GDP is 110. In this 110, 10 is the indirect tax. There must be some direct tax out of 100. 100 में से some direct tax will be paid. तो total tax indirect plus direct 10 plus something होगा. ठीक है. 10 plus something होगा. तो जो समथिंग होगा वो कितना होना चाहिए, कितना जनरली होता है, और ये रेशियो टैक्स टू जीडीपी इंडिया का जो है कितना परसेंट है अप्रॉक्स टोटल मिला करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइड बाय जीडीपी, क्या परसेंटेज? समझ रहे मैं क्या पूछ रहा हूं? यहां से तो क्लियर हो रहा है. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स टोटल टैक्सेस डिवाइडेड बाय जीडीपी, व्हाट इज दैट रेशियो? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और पैरामीटर. तो व्हाट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया? कोई गेस? चलो 3:2 परसेंटेज बताना है तो सब कुछ 100 में बताना है भाई. 3:10 क्यों बता रहे हो? व्हाई नॉट 30:100 बता रहे हो? कोई गेस? 40%. 29. अरे बड़ा. It's around 16 to 17%. It's around 16 to 17%. और इसमें सेंटर एंड स्टेट कंबाइंड है. लेट्स से 16.5%. 16.5%. 16.5% टोटल टैक्स है, सेंटर स्टेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एवरीथिंग. तो टैक्स में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे. अभी आपको जीडीपी बताया तो सोचिए थोड़ा सा बता दें, बाकी टैक्स का डेटा आपको बाद बताएंगे. सो इट्स 16.5% टैक्स टू जीडीपी है इंडिया का. अब ये फिगर याद रहेगा आपको. इसमें सेंटर स्टेट डायरेक्ट एवरी टैक्स इज इंक्लूडेड. बट व्हाट इज द बाइफर्केशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट? सो अप्रॉक्स 11% सेंटर का है, 5.5% स्टेट्स का है. तो टोटल सेंटर एंड स्टेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ इंडिया इज
60 अप्रॉक्स 16.5, क्योंकि थोड़ा बहुत माइनर तो हर साल फ्लक्चुएट करता है, 16.5% ऑफ जीडीपी। समझ गए? तो चलो अब आज का टॉपिक पढ़ते हैं। रियल एग्रीकल्चरल जीडीपी। इसमें दिस इज क्वांटिटी इनटू प्राइस, बट प्राइस आई हैव ऑलरेडी टेकन कांस्टेंट इन दिस। तो ये जीडीपी का फिगर है, रियल जीडीपी, ठीक है। इसमें प्राइस आई हैव ऑलरेडी टेकन कांस्टेंट, सो इट इज ग्रोइंग एट अप्रॉक्स 10% रियल जीडीपी। So let's say this is 10%. This may be 9.8%. This may be 9.6, approx लिख दे रहे, ठीक है। Now let's say this year में ड्रॉट आ गया, ड्रॉट और एक्सेसिव फ्लड, ड्रॉट आ गया मान लो दिस ईयर, ठीक है। लेट्स कॉल इट एबनॉर्मल ईयर, ठीक है। ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, समझ रहे हो ना। एंड लेट्स से जीडीपी रिड्यूस हो गया, ठीक है। जीडीपी गॉट रिड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, प्राइस तो एवरीवेयर इट इज कांस्टेंट, सो जीडीपी रिड्यूस हो गया। नाउ नेक्स्ट ईयर इज अ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल मानसून, नॉर्मल ईयर। तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे प्रोडक्शन कितना होगा अप्रॉक्स? 140 और 80, 80 90 और 140। तो लेट्स से यहाँ पे ₹1, ठीक है। व्हाट इज द ग्रोथ हियर? 100%। कैन यू जस्ट कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करो कितना रहा निगेटिव, माइनस अप्रॉक्स 70 by 130, 90 माइनस, हाँ अप्रॉक्स, नहीं कितना आएगा? 50-60 आएगा ना, 55-60, हाँ अप्रॉक्स 55-60% के आसपास आएगा। चलो 46% छोड़ो, ठीक है, ठीक है। माइनस 70 माइनस 130 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 130, ठीक है। अच्छा इधर बोर्ड पे देखो भैया, इफ एनीवन आस्क्स यू अबाउट द चेंज यू मेजर फ्रॉम द जस्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। व्हाट इज द ग्रोथ, व्हाट इज द रियल एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन 17-18? 100%। रियल ग्रोथ इन 17-18 इज 100%. रियल ग्रोथ इन 16-17 इज minus 46%. If someone asks you that what is the growth in 17-18, you will say 100%. तो बहुत ज्यादा है, it's too much. Generally it was growing at 9-10%, but in 17-18 the growth was 100%. When you measured the growth in 17-18, you measured from here. When you measured the growth in 16-17, you measure it from here, and when you measure it from here, you measured from this year. जैसे if I am standing here, so for me the base is this. For me the base is this. तो from अगर मुझे यहां से जंप करना तो मैं इस बेस से जंप करूंगा. If I stand up here and then jump, तो मेरे लिए this will be the base. ठीक है. Now this 100% I measured from here. तो मेरे लिए when I was measuring the growth in 17-18, the base was this. This base has nothing to do with the base year जो आपने सुना है, ठीक है, वो entirely different concept. So when I was measuring the growth in 17-18, for me I took this as the base. When I was measuring the growth in 16-17, this I took as the base. When I was measuring growth in this, I took this as the base. ठीक है.
Now 17-18, the growth is very high because generally agriculture grows at 10%, but here it grew at 100%. So you are seeing that the growth in 17-18 is very high. This very high growth, is it actually very high? The percentage change looks very high. In this year, the growth percentage looks very high, not because we produce too much, but because from wherever we measured, this was very low. In 17-18, growth is very high, 100%. This is very high, 100%, not because we produced too much in 17-18, it was a normal increase. But from wherever we were measuring, this base was very low, that's why it's looking very high. So if someone asks that how Indian agriculture grew at in 17-18, you will say 100%. Anyone will be shocked. 100%? You may say it's base effect. Because there was a problem in base. In 16-17, what is the growth? Minus 46%. Against too low. If someone asks you that what is the growth in 16-17, you will say minus 46%. He will again be shocked. He will again be shocked. Can you call it a base effect? No, sir. In 16-17, the growth is too low, minus 46%. The growth is too low because you actually produced very less. There was no problem in base from wherever you measured. So growth actually was very less. In 17-18, growth is looking very high, not because you produced too much. It was a normal production as compared to all. This was a normal production. The growth looks very high. This growth is of which year? 17-18. The 17-18 growth looks very high, not because you produced too much. This was a normal production, but because from wherever you are measuring the growth, that base is very less. It was an abnormal year. This is called base effect. If someone says that the growth is very less, minus 46%, it's a base effect. No, it's not a base effect. There is no problem in base. We actually produce very less. So in 16-17, someone asked you what is the growth? You said ki minus 46%. You will be shocked. Minus 46%? You will say yes, minus 46% because there was a drought and we produce very less. Here someone will be saying what is the growth? You will say 100%. You will say 100%. You will say it's a normal production, but because of base effect, the growth is looking very. Now next year, 18-19, maybe production is 150. So next year the growth will again look 8-9%. So base effect gone. Base effect gone. So this base effect बहुत जगह आता है. For example, 2021, because of COVID, our GDP output was less. GDP output was very less, quite less. In 21-22, the output was normal. Output was normal. But while we measured from 2021 year, it looked very high. So it was because of base effect. So our growth was 9.2%. Generally, we were growing earlier 6-7%. It was 9.2% because of base effect. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप लोग मान लो डेली यू आर स्टडिंग 4 आवर्स, ठीक है. आज किसी फ्रेंड की पार्टी होती थी, आज आप पढ़ नहीं पाए, यू स्टडीड जस्ट 1 आवर, यू स्टडीड जस्ट 1. सो नेक्स्ट डे अगेन यू स्टडीड 4 आवर्स. योर पेरेंट्स कॉल्ड कि हाउ मच योर स्टडीड इंक्रीज फ्रॉम लास्ट डे, यू से 200%, 300%. अरे ऐसा कैसे? तो यू से इट्स अ बेस इफेक्ट. इट्स नॉर्मल, ठीक है, बट इट्स अ बेस इफेक्ट. तो इसका बहुत जगह यूज आता है इकोनॉमी में फिगर्स मेजर करने के लिए. तो प्रैक्टिकल टॉपिक है बेसिकली, इसमें और कुछ बताने को नहीं है, ठीक है. राइट, ये तो अगर कोई डेवलपमेंट है या किसी भी एडवांसमेंट की वजह से ये इंक्रीज हो गया और नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो गया, तो सपोज यू आर सेइंग कि दिस इज ₹260 और वो एक सेकंड, ₹260, so this growth is 100%. So someone said कि what is the growth in 16-17? You will say 100%. You will say 100%. Can you say base effect? No, there was no abnormality in base.
The growth is 100% because actually you produce too much. हाँ, ये कम हो जाता ये कितना हो जाता है? है 70. हाँ, ये बेस इफेक्ट ये देखो इसमें दोनों इफेक्ट, यू एक्चुअली प्रोड्यूस लेस, और इसको आप ऐसे करो, इसको रखो 140, इसको नॉर्मल, दिस इज नाउ नॉर्मल. नाउ हियर ग्रोथ इज लेस, minus let's say 60%. Minus, is it base effect? Yes, base here it was an abnormal year, it was very high. This is a normal production. The base was very high because of which we are seeing negative. So it's a base effect. There should be abnormality in the year from which you are measuring. Either low or high, doesn't matter. It should be abnormal. नॉर्मैलिटी का भी कोई वो है कैटेगरी है नहीं, उसका कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब जो नॉर्मल से बहुत डेविएशन हो गया. नॉर्मल जो आउटपुट है और एनीथिंग, इवन प्राइसेस, व्हेन कोविड केम प्राइसेस वर वेरी लो, नेगेटिव चला गया डब्ल्यू होलसेल प्राइस. नेक्स्ट ईयर द प्राइसेस आर नॉर्मल बट इट वाज लुकिंग वेरी हाई, सो नेक्स्ट ईयर द इन्फ्लेशन इज डबल डिजिट. तो बेस इफेक्ट कई जगह आता है. नेक्स्ट टॉपिक. हाँ, ये एग्जाम्पल लिख लो एंड देन यू राइट. चलो मैं स्टेटमेंट आपको लिखा देता हूं. ये लिख लिए. आप स्टेटमेंट लिखो. In 2017-18, the real growth in agri GDP in 2017-18, the real growth in agri GDP is very high. Bracket में लिख लो 100%. This is not because we produced too much in 17-18, but rather this is not because this high growth 100% is not because we produced too much in 17-18, but there was a very less production in bracket rupees 70, which is considered as a base for measuring the growth in 17-18. This is called base effect. अब एक स्टेटमेंट और लिख लो इसमें. अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो. द ग्रोथ इन 16-17 इज वेरी लेस, ब्रैकेट में -46%, because we actually produced very less in the abnormal year 2016-17, because we actually produced very less in the abnormal year 2016-17, and there was no issue in the year 2015-16, and there was no issue in the year 2015-16, which has been considered a base, and there is no issue in 2015-16 which has been considered as base for measuring the growth in 2016-17. So this is not a base effect. ठीक है.